Welcome back. Today we will be starting our next topic, which is necrosis from cellular injury. This lecture will also be bilingual, which means I will be discussing this topic in both English and Hindi languages. So, what is necrosis? Necrosis is exogenous injury to cell which causes the damage of plasma membrane and intracellular components to leak. The cell undergoes enzymatic degradation and protein denaturation. There is local inflammatory reaction that is present in necrosis and not present in apoptosis. नेक्रोसिस में सेल में एक्सोजेनस इंजरी होती है जिसकी वजह से प्लाज्मा मेम्ब्रेन का डैमेज हो जाता है और सेल के इंट्रासेल्युलर कंपोनेंट्स लीक हो जाते हैं. इसमें सेल का एंजाइमेटिक डिग्रेडेशन होता है, प्रोटीन का डीनेचुरेशन होता है और लोकल इन्फ्लेमेटरी रिएक्शन होता है जो एपोप्टोसिस में नहीं होता. नेक्रोसिस इज ऑफ 6 टाइप्स: coagulative necrosis, liquefactive necrosis, caseous, fat, fibrinoid, and gangrenous necrosis. In coagulative necrosis, it is seen in ischemia and infarcts in most tissues except brain. Coagulative necrosis occurs due to ischemia or infarction that leads to injury of the cell, and this injury denatures the enzymes, because of which proteolysis is blocked. On histology, we see a preserved cellular architecture in which the cell's outlines are visible, but the nuclei disappears. There is increased cytoplasmic binding of eosin stain, which is increased eosinophilia, and this shows red or pink color. कोएगुलेटिव नेक्रोसिस इश्कीमिया और इन्फार्क्ट्स में होता है ज़्यादातर टिश्यूज़ में सिवाय ब्रेन के. कोएगुलेटिव नेक्रोसिस इश्कीमिया या इन्फार्क्शन की वजह से होता है जिसकी वजह से सेल इंजरी होती है और एंजाइम्स डीनेचर होने लगते हैं. इसकी वजह से प्रोटियोलाइसिस ब्लॉक हो जाता है और हिस्टोलॉजी में हमें प्रिजर्व्ड सेलुलर आर्किटेक्चर दिखता है, मतलब सेल की आउटलाइंस दिखती हैं बट न्यूक्लियस डिसअपियर हो जाता है. साइटोप्लाज्म में ईओसिन की बाइंडिंग इंक्रीज होती है और इंक्रीज्ड ईओसिनोफिलिया होता है, मतलब हिस्टोलॉजिकल स्लाइड्स में रेड और पिंक कलर दिखता है. दिस इज हाउ द कोएगुलेटिव नेक्रोसिस अपीयर्स टू बी ऑन हिस्टोलॉजी. There is cytoplasmic binding of eosin stain because of eosinophilia, and the slide appears to look red or pink in color. Next is liquefactive necrosis. Liquefactive necrosis is seen in bacterial abscess or CNS infarcts. It occurs because the neutrophils release lysosomal enzymes which cause digestion of the tissue. In early stages of liquefactive necrosis, on histology, we see cellular debris and macrophages, and in late stages, we see cystic spaces and cavitations if the liquefactive necrosis is in CNS, and neutrophils and cell debris if the liquefactive necrosis is seen in bacterial infection. Liquefactive necrosis बैक्टीरियल एब्सेसिस या फिर सीएनएस इन्फार्क्ट्स में दिखता है. ये न्यूट्रोफिल्स की वजह से होता है जो कि लाइजोसोमल एंजाइम्स रिलीज करते हैं और टिश्यू को ही डाइजेस्ट कर लेते हैं. हिस्टोलॉजी में अर्ली स्टेज ऑफ लिक्विफैक्टिव नेक्रोसिस में सेलुलर डेब्रिस और मैक्रोफेजेस दिखते हैं, जबकि लेट स्टेज ऑफ लिक्विफैक्टिव नेक्रोसिस में हमें सिस्टिक स्पेसेस और कैविटेशंस दिखती हैं अगर वो सीएनएस में है, और न्यूट्रोफिल्स और सेल डेब्रिस दिखता है अगर वो एक बैक्टीरियल इन्फेक्शन है तो. दिस इज एन इमेज ऑफ लिक्विफैक्टिव नेक्रोसिस seen in CNS infarcts. Third type of necrosis is caseous necrosis. Caseous necrosis is seen in tuberculosis, systemic fungi, example histoplasma capsulatum, and nocardia. Caseous necrosis occurs because of the macrophages that wall off the infecting microorganism.
and form granular debris. On histology, we see fragmented cells and debris that is surrounded by lymphocytes and macrophages, which is the granuloma, and there is cheese-like gross appearance. Caseous necrosis, TB, systemic fungi, एग्जाम्पल हिस्टोप्लाज्मा कैप्सुलेटम और नोकार्डिया में दिखता है. ये मैक्रोफेजेस की वजह से होता है जो कि इन्फेक्टिंग ऑर्गेनिज्म को वॉल ऑफ करते हैं और ग्रैनुलर डेब्रिस बनाते हैं. हिस्टोलॉजी में हमें फ्रैगमेंटेड सेल्स दिखते हैं और डेब्रिस जो कि लिम्फोसाइट्स और मैक्रोफेजेस या फिर ग्रैनुलोमा से सराउंडेड होते हैं और ये एक चीज लाइक ग्रॉस अपीयरेंस शो करते हैं. दिस इज एन इमेज शोइंग caseous necrosis with cheese-like gross appearance. Next is fat necrosis. Fat necrosis is of two types, enzymatic and non-enzymatic. Enzymatic fat necrosis is seen in acute pancreatitis, which is saponification of peripancreatic fat, and non-enzymatic fat necrosis is seen in traumatic, example injury to breast tissue. Fat necrosis is caused because of damaged pancreatic cells which release lipase. This lipase breaks down the triglycerides and liberates fatty acids which bind to calcium. This is known as saponification and it shows a chalky white appearance. On histology, we see dead fat cells without peripheral nuclei and there is saponification of fat, that is fat combined with calcium, and this appears डार्क ब्लू ऑन H&E स्टेन. फैट नेक्रोसिस दो तरीके का होता है, एंजाइमेटिक एंड नॉन एंजाइमेटिक. एंजाइमेटिक फैट नेक्रोसिस एक्यूट पैंक्रियाटाइटिस में होता है जिसमें सेपोनिफिकेशन ऑफ पेरीपैंक्रियाटिक फैट होता है, और नॉन एंजाइमेटिक फैट नेक्रोसिस ट्रॉमेटिक होता है जैसे कि इंजरी टू ब्रेस्ट टिश्यू. फैट नेक्रोसिस पैंक्रियाटिक सेल्स के डैमेज की वजह से होता है जो कि लाइपेज रिलीज करते हैं और ये लाइपेज ट्राइग्लिसराइड्स का ब्रेक डाउन करते हैं जिसकी वजह से फैटी एसिड्स निकलते हैं. जब ये फैटी एसिड्स कैल्शियम के साथ बाइंड करते हैं तो वो सेपोनिफिकेशन करते हैं और इसकी वजह से चौकी वाइट अपीयरेंस आता है. हिस्टोलॉजी में हमें आउटलाइंस ऑफ डेड फैट सेल्स दिखती हैं जिनमें पेरिफेरल न्यूक्लियस नहीं होता और सेपोनिफिकेशन ऑफ फैट दिखता है, मतलब फैट कंबाइंड विद कैल्शियम, और H&E स्टेन पर ये डार्क ब्लू अपीयर होता है. दिस इज एन हिस्टोलॉजिकल इमेज ऑफ फैट नेक्रोसिस. इट अपीयर्स टू बी डार्क ब्लू ऑन H&E स्टेन. नेक्स्ट इज फिब्रिनॉइड नेक्रोसिस. दिस occurs in immune vascular reactions, example polyarteritis nodosa, and non-immune vascular reactions like hypertensive emergency, preeclampsia. Fibrinoid necrosis occurs because of immune complex deposition, which is type 3 hypersensitivity reaction, and or plasma protein, for example, fibrin leaking from damaged vessels. Under histology, we see vessel walls containing eosinophilic layer of proteinaceous material. Fibrinoid necrosis इम्यून वैस्कुलर रिएक्शंस में होता है जैसे कि पॉलीआर्टराइटिस नोडोसा, और नॉन इम्यून वैस्कुलर रिएक्शंस में होता है जैसे कि हाइपरटेंसिव इमरजेंसी और प्री एक्लेम्शिया. फिब्रिनॉइड नेक्रोसिस इम्यून कॉम्प्लेक्स के डिपोजिशन की वजह से होता है जो कि टाइप 3 हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन होता है, या फिर जब प्लाज्मा प्रोटीन जैसे कि फिब्रिन डैमेज वेसल से लीक होने लगता है, इसकी वजह से भी फिब्रिनॉइड नेक्रोसिस हो सकता है. हिस्टोलॉजी में वेसल वॉल्स में हमें eosinophilic layer of proteinaceous material दिखता है. This is an image of fibrinoid necrosis with the vessel walls containing eosinophilic layer of proteinaceous material. Last is gangrenous necrosis. This occurs in distal extremities and GI tract after chronic ischemia. Gangrenous necrosis is of two types, dry and wet. Dry gangrenous necrosis is because of ischemia and wet gangrenous necrosis is because of superinfection. In histology, if we see dry gangrenous necrosis, there will be similar appearance like that of coagulative necrosis, whereas
For wet gangrenous necrosis, the appearance will be as if liquefactive necrosis is superimposed on coagulative necrosis. गैंग्रीनस नेक्रोसिस डिस्टल एक्सट्रीमिटीज में होता है या फिर जीआई ट्रैक्ट में हो सकता है आफ्टर क्रोनिक इश्कीमिया। गैंग्रीनस नेक्रोसिस दो तरीके का होता है, ड्राई एंड वेट। ड्राई गैंग्रीनस नेक्रोसिस इश्कीमिया की वजह से होता है और वेट गैंग्रीनस नेक्रोसिस सुपर इन्फेक्शन की वजह से होता है। हिस्टोलॉजी में ड्राई गैंग्रीनस नेक्रोसिस कोएगुलेटिव नेक्रोसिस जैसा दिखता है और वेट गैंग्रीनस नेक्रोसिस लिक्विफैक्टिव और कोएगुलेटिव नेक्रोसिस का मिक्सचर दिखता है। This is an image of dry gangrenous necrosis caused because of ischemia.